Hello and welcome to Fam Health, a platform that brings to you the right knowledge on different aspects of health by a panel of senior super specialists. As a part of our series on Mission Heart and Vascular Health, today the theme is Hypertension and Kidney Connect. So I welcome you all to Chopra, Sawhney and Kher Dialogues. To discuss this very serious issue, we have a very esteemed panel of experts. Our guide and mentor, Dr. H.K. Chopra, who is a senior consultant cardiologist at Medanta Mulchand Heart Institute, Chairman CME Mulchand Medicity, Country Head AHA, Chairman WWF WHA. Dr. Chopra will be moderating the panel today. He is joined by two super specialists, Dr. JPS Sawhney, Senior Consultant Cardiologist and Chairman of the Department of Cardiology at Sir Gangaram Hospital. And we also have Dr. Vijay Kher, who is the Chairman, Division of Nephrology and Kidney Transplant, Medanta Kidney and Urology Institute at the Medanta Medicity, Gurugram. A very, very warm welcome to all our experts. And without further ado, I hand over to Dr. Chopra to take the discussion forward. Dr. Chopra, sir. Thank you very much, Vishali. Dear friends, ladies and gentlemen, it's really a great pleasure and honor indeed to be here on the platform of Tata Play Fam Health on a very special occasion for the first time in our country. And the occasion is very well known to you, CSK Dialogue, Chopra, Sawhney and Kher Dialogue on hypertension, kidney connect, happening for the first time to create an impact on the relationship of kidney and hypertension and vice versa. This is the broader platform we have used here, Heart and Vascular Health, with a very eminent faculty who has been just introduced, Dr. JPS Sawhney, a very eminent cardiologist from the international arena of cardiology, and Dr. Vijay Kher, a very eminent nephrologist known all over the world. What is the theme today? The theme of this dialogue is to enhance awareness, early detection, prevention, and timely treatment of both hypertension and kidney disease at a primordial level, primary level, secondary, and tertiary level. As we all know, that this month is a kidney care month, and the March 10th is a kidney day of the world. But if you ask my personal opinion, every day is a kidney care and a hypertension care day. We have to be very, very vigilant for our blood pressure and vigilant that we don't fall victim to kidney problem. That is the main agenda today. Since we are very eminent faculty, they'll be telling us in details about the prevalence of kidney problems and the prevalence of hypertension problems, which we all should know. And we all know that India is the world capital of hypertension, diabetes, heart attacks, stroke, dyslipidemia, obesity, and now even CKD, chronic kidney disease. It's a matter of great concern. We are becoming famous in the world as the world capital of illness. But the time has come now, we should have a paradigm shift from illness to wellness. And that's how we started this digital platform to enhance the awareness, how we can become the wellness capital of hypertension care and wellness capital of kidney care. The academic partner today is IPCA Laboratories, who are always there to help us to enhance this awareness program through the media like television or digital media. And we are having a very important dialogue. And the first question I will ask our eminent nephrologist, Dr. Vijay Kher, sir. And the question is, what is the scenario of kidney problems in India? And what do you think are the most common risk factors which you come across? Dr. Vijay Kher, sir. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Chopra, for having me on this program, and it's a pleasure and a privilege to be here.
850 million people have some form of kidney disease across the world at this point of time. 850 million people. You can see the enormity of the prevalence of chronic kidney disease. In India, 1 in 10 people is suspected to have some form of kidney disease, which would mean we will have 130 million people at least who have some form of kidney disease. So you can see it is the 8th most common cause of death at this point of time in India. And the way it is growing, it is going to be the 5th cause of death in India. Dr. Chopra, your awareness program, along with other colleagues, has decreased cardiovascular disease worldwide as well as in India as a cause. Although it still remains #1 cause of death, but it is decreased as far as the last 10 years. Global burden of disease shows that there is a decline. The 2 diseases which have increased in India are diabetes and chronic kidney disease. And you were just saying that there is an epidemic, and unfortunately we hold the title of having the largest number of diabetics in the world, and India becomes the sort of diabetic capital of the world, which is not something that you and I should be very proud of. We need to be taking care of reducing the incidence of diabetes and kidney. So the commonest causes of this increasing burden is diabetes, #1 risk factor for development of kidney disease. Second most common cause, hypertension. And then there is a host of other diseases like glomerulonephritis, which is kidneys are consists of the filtering units which are called glomeruli, and we have about 1 million in each of our kidney, and this gets inflamed by an immunological process, an autoimmune process, and that is another cause of kidney disease. Then in addition, there is stone disease, urinary tract infections, and some congenital diseases like polycystic kidney disease and others, also less common diseases. But drugs become again another important cause of chronic kidney disease. And in India, we are very commonly using drugs over the counter. We go to the chemist and buy drugs like gas medicines, the painkillers and others. For every small reason, we go to the pharmacist and buy these drugs, and they become again important cause of chronic kidney disease. So to highlight again, diabetes and hypertension are the 2 commonest causes of kidney disease, and the growing epidemic of kidney disease across the world and in our country too. Thank you very much, Vijay. I think your point are very well taken. The whole audience should know today that the commonest predisposing factor for kidney problems in India are hypertension and diabetes, is nicely expressed by Dr. Vijay Kher. Dr. J.P. Sani, I think you are an authority in the hypertension registry at a national level, and your contribution is very well known to all of us. My question to you is, please highlight in the public interest as to what is the scenario of hypertension in India, controlled and uncontrolled. And second point, which you are very fond of, is your contribution in giving a message to the masses, which is the right way to measure the blood pressure at home BP monitoring, or CBPM, what we call as clinical blood pressure monitoring, or ambulatory blood pressure monitoring. It's very, very important. People ask these questions when they come to us. Kindly express in details so that everybody understands the power and promise of measuring the blood pressure, at which location, why, where, and how. Dr. J.P. Sani, sir. Thank you, Dr. Chopra. Thank you, Tata Fame and IPCA for inviting me for this very prestigious meeting where we are having a awareness program for the hypertension, which is the most common risk factor which attributed to the mortality of human being on this earth.
And what we found approximately in our country, around 35% adult population in the urban area and around 27 to 30% in the rural area are suffering from high blood pressure. Such a big figure. You can imagine how many people are suffering from this. And as you rightly, Dr. Kher has said now, this is one of the important, if you don't treat hypertension, then there will be chances of having heart attack, heart failure, stroke, chronic kidney disease, as Dr. Kher has said already, and even retinopathy and eye problems. So many complications comes in if you don't treat that. And normal cutoff level, which we take, is 140 systolic and 90 diastolic. But the goal is to keep the blood pressure at 130/80, which has been accepted by most of the guidelines in clinical practice. So your other question is the how to measure blood pressure. So earlier, what we used to have a traditional way of managing was to come to office of the clinics and to check the blood pressure. So that gives you a single reading. It has a disadvantage that you get only one single reading in a given time. Secondly, around 25 to 20 to 25% patient, because of the they develop what we say white coat hypertension, and they have high blood pressure in the clinic. They have high heart rate. And when they go back home and check the blood pressure, their blood pressure is normal. So they are unnecessarily overdiagnosed as a case of hypertension. So that's the reason why recent guidelines have now shown, and during COVID times, we have learned also that jo patients at home blood pressure should also be important method of diagnosing and treating and monitoring blood pressure in clinical practice. So अभी उन्होंने guidelines ने बताया कि home blood pressure monitoring से बहुत फायदे हैं. एक तो we can have a multiple readings. We have readings before medicines, after medicines. Only thing is we should teach the public how to take the blood pressure when they're taking at home. So since we have multiple readings, it बड़ा easy होता है. They can convey to us their multiple readings, and so we can control the blood pressure and adjust the doses of blood pressure lowering drugs appropriately so that they are controlled. Because if single reading in office may not be adequate, उससे मुश्किल हो जाती है कई बार. पेशेंट मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शाम की क्लिनिक में हमारे पास आता है तो बीपी हाई होता है. तो इसलिए वो उसको ध्यान में रखते हुए home blood pressure monitoring has become now a very important part of the management of hypertension. And home blood pressure monitoring में हमने बोला है कि BP should be 130/85 as a normal cutoff. Uske liye patient should keep normally automatic blood pressure monitoring machine use hoti hain. तो उसके लिए हम कहते हैं patient को he should sit in a quiet room. He should not take any tea or coffee half an hour, at least within half an hour before the blood pressure. And maybe sometime we have to take two readings. The first reading, and after 2-3 minutes, you can take second reading. Sometime first reading, maybe you are little apprehensive, you can discard that and take the second reading. अब कुछ instruments ऐसे भी आ गए हैं जिसमें 3 reading automatically ली जाती है and you will get the mean of that. So those instruments are also available now, very useful to calculate the blood pressure. एडेड एडवांटेज होम मॉनिटरिंग का क्या होता है, जो हमने कोविड टाइम में देखा कि जो पेशेंट इंडेक्स पेशेंट तो पकड़ा जाता है, लेकिन घर के फैमिली मेंबर्स का भी ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो हमने देखा अराउंड 15 to 20% of the other family members like brother, sister, parents, those who are not aware of blood pressure, they also were diagnosed. So undiagnosed hypertension also become a very important part. Coming to the second type question which you said about the ambulatory blood pressure monitoring, yes, this is also very important. जिसमें हम एक मशीन लगाते हैं जिसमें 24 घंटे में अराउंड 35 से 40 रीडिंग ली जाती हैं. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये रात के टाइम में जब सोए होते हैं तब भी ब्लड प्रेशर लेता है. तो एक डिपिंग कहते हैं हम कि नॉर्मली जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट लो हो जाता है around 10% or so, but if it is not, then हम उसको नॉन डिपर कहते हैं. उसमें उसके कारण हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, स्ट्रोक बहुत ज्यादा होते हैं जिनमें नॉन डिपर होता है. सो ये डिपिंग स्टेटस ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में बड़ा इजीली पकड़ा जाता है. मॉर्निंग अप से जो ब्लड प्रेशर होता है, जैसे हम उठते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो भी पता चल जाता है. सो एक गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर जो होता है, तो नॉर्मली हम कहते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर में 130 से 85 ब्लड प्रेशर शुड बी देयर. रात को सोते समय 120-70 से ऊपर ना जाए. So this gives you additional benefit compared to the home blood pressure monitoring. So this will help us to not only diagnose but also treat blood pressure effectively. So dear friends, you just heard Dr. J.P. Sani when he said the prevalence of hypertension is 3 times more than the CKD. Very important information. And he said
It's seen more in the urban areas. That means there is some factor responsible for a high blood pressure in the cities as compared to suburbs where the prevalence is low. We'll discuss in next minutes why it happens. The second thing he mentioned very rightly is, if the blood pressure is uncontrolled, it may be responsible for a heart attack, brain attack, eye attack, nose attack, and leg attack. All our arteries, we have about 60,000 miles of blood vessels in our body where the blood is flowing. When the pressure is high, they may dissect. They can be occult or they can be overt. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हमारी धमनियां होती हैं वो फट जाती है, कभी नाक में फट जाती है तो ब्लीडिंग हो जाता है. अभी कल मैंने पेशेंट देखा फरीदाबाद से, एक आंख ब्लाइंड हो गई उसकी, ब्लड प्रेशर वाज 200 by 140, कभी चेक ही नहीं कराया, 73 ईयर ओल्ड. तो ये कहने की बात ये है कि जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होगा तो ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है. और जो डॉक्टर खेर ने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होगा तो किडनी की जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, उसमें आफ्रेंट और इफरेंट वेसल होती हैं, वो भी फट जाती हैं, उससे भी ब्लीडिंग हो जाता है यूरिन के अंदर और किडनी में डैमेज हो जाता है. उसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड चीज जो डॉक्टर जेपी साहनी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कही कि आज की डेट में हर एक आदमी के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे को घर में बीपी चेक कराना है. और घर पे बीपी चेक करने का बहुत बड़ा ईज है. आप रिलैक्स रहते हो और ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही रिकॉर्ड होता है. अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको थोड़ी टेंशन होती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. उसे हम कहते हैं व्हाइट कोट, चाहे व्हाइट कोट हो या ना हो, लेकिन व्हाइट कोट कहते हैं, उसका नाम व्हाइट कोट है. लेकिन डॉक्टर ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो नाम चेंज करना चाहिए. अब किसी ने डाल दिया व्हाइट कोट तो चल रहा है व्हाइट कोट. आगे से मैं कह दूंगा कि भाई क्लिनिक ब्लड प्रेशर इज द राइट वे. किसी क्लिनिक में जाओ, उससे ब्लड प्रेशर हो जाए. एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर के बारे में कहा उन्होंने कि जिस आदमी का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, सानी साहब ने कहा कि अगर मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कई लोगों का शाम को बढ़ जाता है, उसे कहते हैं इवनिंग सर्ज, कईयों का मॉर्निंग सर्ज होता है. उन्होंने ये भी कहा कि रात को ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, कम से कम 10 मिलीमीटर, पल्स भी कम होना चाहिए 10 मिलीमीटर. और अगर वो रिवर्स हो जाए या तो उसको नॉन डिपर कह देते हैं. इससे कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं, किडनी के भी, हार्ट के भी और ब्रेन के भी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो मैसेज ये है पब्लिक के लिए कि अपना ब्लड प्रेशर आप सीखिए. एक और मैसेज दिया डॉक्टर सानी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोविड टाइम में जब लोगों ने बीपी घर में चेक किया तो कई लोगों को पता ही नहीं था कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर का चेकअप हुआ. एंड हाइपरटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोमॉर्बिडिटी विद कोविड. ये देखा गया है कि जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो या जो दवाइयों पे ना हो, उनको सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम. सो ब्लड प्रेशर हैज टू बी कंट्रोल्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. और स्पेशली कौन सी दवाइयों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है जिससे कि कोविड की सिवियरिटी कम हो जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले 2-3 सवालों में. The next question I also asked Dr. Vijay Kher. Dr. Kher, I think we are on a very common public platform. We'd like to know from you, what are the functions of the kidney? What is the size of the kidney? Where are they located? And how we can enhance the function of the kidney? What are the methods before we come to the kidney problems in real sense? Dr. Kher, sir. So, very important question which Dr. Chopra has asked. And I think kidneys perform the function of purifying as a detoxifying organ of the body. It's a scavenger of the body, removes all the impurities that are accumulated in our body because of metabolism, our metabolism, the food we eat, the movements we do, and all the activities that we do generate some impurities. As the metabolism of the body occurs, we develop some impurities, and these impurities are removed by the kidney through urine. So kidney has an extremely high blood flow compared to the size of the organs. This is about 150 grams of about 10 centimeters long kidney, about
4 centimeters wide, 5 centimeters wide kidney on side. So both sides, they are on the flanks at the lower part of the chest and the between at the back of our abdomen. They are on the back side of our abdomen, and kidney is supplied 1/4 of the blood supply, 1/10 of the size of the body, but the blood supply is 1200 ml per minute. Total heart volume, which Dr. Chopra must have talked to you many times over, is about 5 liters. So 1/4 of that blood volume every minute goes to the kidney. And there is a reason for that. And the reason for that is, though the size of the kidney is small, but the function that the kidney does is extremely important, because it purifies the body, keeps the body safe. All the chemical disturbances which can occur, you sit with your friends, drink 10 liters of beer on a binge, you do not get drowned. You become a saint and do not take any fluid for 10 days, 15 days, a month. You do not get dehydrated, because kidneys will sense that this man has started a fast, and therefore will decrease all the urine as well as the amount of salt and water in the body, because kidney conserves that water and knows. So it's a sensing organ of the body, and it identifies that this person has consumed less or more, and therefore purifies. So kidney has an extremely important function of removing all the waste products of the body, keeps the chemical environment of the body important. In addition to this excretory function of the kidney has a hormonal function also. Kidney secretes a lot of hormones. So endocrine organ like pancreas secretes insulin. Kidney secretes hormone like erythropoietin. Erythropoietin is important for making our hemoglobin. So our hemoglobin is up basically because kidney manufactures erythropoietin, and erythropoietin is the hormone which helps us to make our blood. And our hemoglobins are up because of hemoglobin. So that's the reason why patients with kidney disease invariably have low hemoglobins, or anemia is very common. Kidney also manufactures another hormone called vitamin D. Active vitamin D is manufactured in the kidney, and it helps us to make our bones strong, keep our bones and body strong. So patients of kidney disease again have weak bones, and bone disease is very common in patients with chronic kidney disease. So vitamin D might have to be supplemented in some of these, and the chemistry of the body is controlled by some of these hormones. Vitamin D controls parathyroid hormone, which makes bones weaker. So there is a huge kind of alterations which occur in the chemistry of the body, by which in patients who do not have kidney function which is good, in those patients, then many of these hormones are altered, they are deficient, and therefore there is many alterations which occur in the body which affect many other parts of the body. So when kidney disease occurs, it's not only that the kidneys are affected, but because kidneys excrete waste products, produce various hormones, there is alteration in almost every organ of the body. So that's extremely important. Kidney is also very important in controlling blood pressure. Very, very important organ for controlling blood pressure, because salt is inherently connected to high blood pressure. Increase in salt intake, there is increasing incidence of high blood pressure. And kidney is the organ which excretes the sodium and the other electrolytes along with water. And in patients with kidney disease, when salt and water is not excreted adequately, the body accumulates salt and water, becomes swollen. That's why swelling is a very common early symptom of kidney disease, because the salt and water which you and I take are not excreted by the body, are not excreted by the kidney, and therefore they accumulate in the body, and there is swelling over our body. And that's why kidney controls blood pressure. Kidney also secretes a hormone called renin.
and renin is secreted based on what is the blood supply to the kidney. So kidney's blood supply, if it goes low, like there may be narrowing in the artery in the kidneys, that can also cause, which is called renovascular hypertension or renal artery stenosis, which can cause hypertension because of that narrowing in the blood supply, there is increased secretion of renin, and that causes high blood pressure. Also an important cause of high blood pressure. So kidney is not only affected by hypertension, but kidney is an important organ which can cause hypertension, both by the parenchymal disease, which I mean is diseases which affect the kidney's substance, the filters that we talked about, the intervening areas, the interstitium or the tubules that we talked about. So those parenchymal diseases can cause hypertension, and then the renovascular hypertension, which is caused usually by the decrease in the blood supply to the kidney, and that can cause hypertension. So two important messages that are important. One, that kidney is an organ which can be affected by uncontrolled hypertension, and kidney is the organ which can cause blood pressure, and therefore is an important organ. Whenever one is looking at the causes of blood pressure, one should always look at kidney function to see that kidney is not a cause of hypertension. And uncontrolled hypertension is extremely bad for kidneys. Those patients who have kidney disease need blood pressure control, like Dr. Sani said, 140/90. I would say for patients of kidney disease, the blood pressure should be 130/80 and less. By and large, lower blood pressures are much better for the kidneys than higher blood pressures. Thank you very much, Dr. Vijay Kher. I think you gave a very, very important message that kidney is a very vital organ of our body. No kidney or underfunctioning kidney is very, very detrimental. Kidney should be functional. You mentioned almost like 1/4 of the volume of the blood goes to the kidney. So kidney function is very, very important. I think this is a very important message you mentioned. Dr. Sani, what do you think are the most important predisposing factors for hypertension? Like we see a lot of people who come to us in the clinic who are obese and have got obstructive sleep apnea. We like to have your opinion on that. And number two, we see a lot of seasonal variation of blood pressure. ठंड में लोगों के blood pressure बढ़ जाते हैं, गर्मी में लोगों के blood pressure कम हो जाते हैं. Just we like to have your opinion on these two important aspects, sleep apnea and seasonal variation relationship of blood pressure. Dr. Sani, sir. Thank you, Dr. Chopra. Yes, Dr. Kher ने अभी बताया कि जिसको हम कहते हैं treatable causes of hypertension, secondary hypertension, kidney disease बड़ी common है. कुछ tumors होते हैं, pheochromocytoma, साइटोमा होता है, किसी में adrenal gland की tumor होते हैं, renal artery stenosis. These are the treatable causes, but one of the important, most common treatable cause is sleep apnea, obstructive sleep apnea, which is highly prevalent. हमारे society में men में approximately 7 से 8% और women में 2 से 4% very common sleep apnea है, and we have done some studies and research on that. Last 15-20 years, we found that कि जिनको sleep apnea की बीमारी होती है, snoring होती है, खराटों की बीमारी होती है, उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है और अल्टीमेटली बहुत सारी डिजीजेस बन के आती है. एंड मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड डिजीजेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीटेबल कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर इज स्लीप एप्निया. अदर बाकी बीमारी, लंग्स की बीमारी, स्ट्रोक, हार्ट ब्लॉक्स, डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां आर एम्पलीफाइड बाय स्लीप एप्निया. सो स्लीप एप्निया को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बंदा घोड़े बेच के सोया है, समथिंग लाइक दैट. इट इज नॉट. इनफैक्ट वो खुद भी नहीं सोया, ना किसी और को सोने दिया साथ में, और उसके कारण उसको कई सारी बीमारियां आ रही हैं. तो इसका टेस्ट होता है, स्लीप स्टडी करते हैं हम, फिर उससे हम AHI इंडेक्स देखते हैं, और उसके बाद उसका इलाज में हमने देखा अगर सीवियर है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेशेंट्स में सीवियर होता है, तो हम उनको कहते हैं कि भाई वेट रिडक्शन करो, सम एक्सरसाइजेस भी सिखाई जाती है. पर अल्टीमेटली कई बार एक मशीन होती है CPAP
या कई बहुत सीवियर केसेस में बाईपैप लगाया जाता है, जिससे उनकी स्नोरिंग बंद होती है। देख ऑक्सीजन सैचुरेशन जो रात को हमें सोते समय 98-99% मिलती है, जो कि लंग्स के थ्रू, ब्लड सेल्स के थ्रू, हमारे जितने थके हुए सेल होते हैं रात को सोते समय उनको न्यूट्रिशन जाता है। लेकिन ये स्लीप अपने वाले पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होती है कि इनका ऑक्सीजन 70-75 रह जाता है। सो जो सेल है उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं जाता, जिसके कारण ये जब पेशेंट सुबह उठता है तो थका होता है, दिन भर उसको नींद आती रहती है, जहां बैठता वहां सो जाता है। तो इस तरह से ये सिम्टम बड़े कॉमन होते हैं अलोंग विद हाई ब्लड प्रेशर। सो इफ यू ट्रीट दिस स्लीप एपनिया, उससे हमने देखा बहुत सारे पेशेंट की दवाइयां ब्लड प्रेशर की कम हो जाती हैं। और मेरे कुछ ऐसे पेशेंट भी है जो बड़ा कॉमन कंसेप्ट है सोसाइटी में कि भाई एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई लग गई तो सारी उम्र ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती है। ये हमने देखा ये ट्रू नहीं है। सम ऑफ द माइल्ड ब्लड प्रेशर पेशेंट, जैसे 140/100 बीपी, किसी का 150/100 बीपी है और उसका ट्रीटेबल कॉज है, लाइक उसको ओबेसिटी है, वो एक्सेस अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, टोबैको करता है, एक्सरसाइज नहीं करता और उसको स्लीप डिसऑर्डर है, हम उसको अगर ट्रीट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ, हमने देखा उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। और कई पेशेंट में हमने ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद भी कर दी, ये भी पॉसिबल है, ये हुआ है। दिस इज वेरी वेल नोन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच आई वांट टू कन्वे। सेकंड क्वेश्चन आपका था सीजनल वेरिएशन। यस, सीजनल वेरिएशन बड़ा कॉमन है और ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर विंटर में 1 से 2 डिग्री चला जाता है और समर में 45 डिग्री चला जाता है। ये प्रॉब्लम मुंबई या गोवा और चेन्नई में नहीं है, वहाँ टेम्परेचर बिटवीन 20 to 40 डिग्री रहता है। तो उसके कारण क्या होता है कि विंटर जैसे आती है नवंबर एंड या दिसंबर में, हमारा पसीना बंद हो जाता है, सॉल्ट और वाटर अंदर ले जाता है। जब एंड ऑफ दिसंबर आता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, विटामिन डी कम हो जाता है, फॉग आ जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है। ये सारी चीजें मिलके, और फिर सोशल फैक्टर भी हमने देखे हैं, लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। Then festivals become more during winter, they take more salt, they smoke more, they drink more. So all those factors जब मिल जाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर सब पेशेंट्स का बढ़ जाता है। So जो पेशेंट X डोज ले रहा होता है उसको 2x की जरूरत पड़ जाती है डोज की, और वो नहीं लेता तो उसके कारण वो कई बार नेजल ब्लीडिंग के साथ में आंख में ब्लीडिंग, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक के कारण इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं। सो सीजनल वेरिएशन हमने देखा विंटर में इस कारणों के कारण बीपी बढ़ता है और हमें ब्लड प्रेशर की दवाई की डोज बढ़ानी चाहिए। और एंड नवंबर में और बिगिनिंग दिसंबर में जरूर हर ब्लड प्रेशर पेशेंट को डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, अपनी डोज एडजस्ट करनी चाहिए। और समर मंथ में अप्रैल मई जून में ये उल्टा हो जाता है, पसीना आता है, सॉल्ट एंड वाटर लॉस होता है, हमने देखा ब्लड वेसल्स डायलेट करती है बिकॉज ऑफ द हीट, एंड पीपल दे स्टार्ट वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग एंड मल्टीपल अदर फैक्टर्स के कारण हमने देखा ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाता है। उनकी ब्लड प्रेशर की डोजेस जो है हमें कम करनी पड़ती है ड्यूरिंग अप्रैल मई जून में। पर्टिकुलरली डाययूरेटिक की डोज जरूरत पड़ती है, जो पेशाब आती है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वो डाययूरेटिक हमें विंटर में देना पड़ता है, समर में कई बार हमें हटा देना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया की ज्यादा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये पेशेंट्स को समझना चाहिए। Thank you very much, Dr. Sani. I think you mentioned a very important point. हमारे पास कई मरीज आते हैं और बीबी जी की एक कंप्लेन होती है कि मैं तो अपने हस्बैंड के पास सोती नहीं, क्योंकि बहुत खराटे मारते हैं। वो बच्चे कई बार रिकॉर्डिंग करके लाते हैं, उनकी जो खराटों की जो आवाज होती है उसकी रिकॉर्डिंग लेके आते हैं कि देखिए हम कैसे सो सकते हैं। सो स्नोरिंग इज a very powerful risk factor. Don't think the person is in deep sleep and he's snoring. कभी कभी इतना स्नोरिंग हो जाता है कि कईयों का सांस भी रुक जाता है, उसे हम कहते हैं एपनिया। तो खून का दौरा ब्रेन में कम हो जाता है। एज डॉक्टर सानी ने अभी कहा कि नेक्स्ट डे वो काफी सुस्त होते हैं, उनके अंदर कंसंट्रेशन पावर कम होती है या सोते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लेडी का एग्जांपल जरूर दूंगा आपको। एक पेशेंट आई, उसको स्लीप एपनिया, थोड़ी ओबीस थी, उसने ऑपरेशन कराया, सो कॉल्ड यूवुलेक्टमी, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग को एब्लेशन कराया, लेकिन प्रॉब्लम हुई कि वही, अगर मोटापा कम नहीं करेंगे तो इस ऑपरेशन का क्या फायदा। हमने जब उनको जांच करी, शी इज गॉट ए ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी और साथ में उसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो हमको पेशेंट एज ए होल देखना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, और फिर उसका इलाज करें। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है डॉक्टर सानी ने। अब ये ना सोचे कि एक बार दवाइयां शुरू हो गई हाई ब्लड प्रेशर की तो जिंदगी भर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप स्लीप एपनिया को कंट्रोल कर दें
मोटापा कम कर दें और बाकी चीजों को कंट्रोल करें तो काफी हद तक हम दवाइयां बंद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम सा वेदर है, गर्मी भी बहुत होती है, ठंड भी बहुत होती है। इससे ब्लड प्रेशर का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है और दवाइयों का डोज रिक्वायरमेंट भी फर्क होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है जो हमको समझना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। We have Dr. Vijay Kher now. I think I'll ask very important question to him, Dr. Vijay Kher. एज का क्या संबंध है ब्लड प्रेशर और किडनी के साथ? हमने ये देखा है कि जब लोगों की एज एडवांस होती है 60 के बाद 65 के बाद, तो कईयों का ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है, कोई डायबिटिक होते हैं, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। हम आपका ओपिनियन चाहेंगे। और नंबर 2, सेक्स का कोई रिलेशनशिप है क्या? आप जो सीक्रेटली देखते हैं वो ज्यादा मेल्स में है या फीमेल्स में है, और अगर किस में ज्यादा है तो वो क्यों? We'd like to know what your reasons are in relation to the age, young or old, men or women. What are the differences? Dr. Kher sir. So, this becomes very important basically because kidney disease, obviously the common causes that we talked about are diabetes and hypertension. Usually ये कारण 10 से 15 साल of uncontrolled blood pressure or uncontrolled diabetes usually lead to chronic kidney disease. So ये बीमारियां, as we grow older, our disease, chronic kidney disease becomes a common cause, common ailment in the elderly, but there are causes in children as well. So this disease is not that it occurs only in patients who become older. This disease is also prevalent in children, and in children, the common causes of chronic kidney disease would be congenital disorders, usually kidney ki genetic bimariyan or some abnormalities of the urinary tract. The lower urinary tract is not functioning adequately. The lower urinary tract has a posterior urethral valve जो बच्चों में हो सकता है. Reflux की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बच्चों में बहुत कॉमन हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्कारिंग ऑफ किडनी हो जाती है, जो कि लेटर ऑन लाइफ प्रेजेंट्स विद हाइपरटेंशन. सो मेनी पीपल हु हैव हैड रिफ्लक्स इन द चाइल्डहुड विल डेवलप later on hypertension, and in women usually this is detected at the time of pregnancy because pregnancy becomes a stress for the kidney, and many of these patients will be found to have kidney dysfunction or hypertension during pregnancy. So they have hidden hypertension, and during pregnancy hypertension can present as a manifestation that they find that the blood pressures are very high, which is not good for the baby as well as for the person who has the blood pressure, for the lady as well. Kidney disease is relatively slightly more common in women, but the prevalence of kidney disease actually is almost equivalent in both men and women. But we see far more men in our clinics than women in our clinics. Unfortunately, that's a social and a gender bias in our society, that women and ladies are not brought to the clinic. They are usually neglected as far as care is concerned. We give far more importance to men, which is very unfortunate. Ladies are the ones who do the most of the work at home. They contribute tremendously to our society, to our family, and are extremely important. But unfortunately, as it exists in our country, it is unfortunate. We're very shameful and ashamed of it, that this is something we must, as a society, we must correct, that we do not see ladies as commonly, although the disease is almost equally prevalent. I see far more patients on dialysis are male patients. Transplant patients, 80% are men, 20% are women. As far as donation is concerned, when matter of kidney donation is concerned, 80% are women and 20% are men. So men don't donate, women donate. But when it is coming to taking the kidneys, then men are forthcoming and women are not forthcoming. Very sad statistics, unfortunately, but the true statistics. And unfortunately, it hasn't changed over the last 40 years of my practice.
Dr. Chopra. So real. The disease is prevalent commonly in both, but as we grow older, many of the atherosclerotic diseases become more common, and therefore many of these patients may have vessels become very stiff, and systolic hypertension is very, very commonly seen in elderly population, and you will find that the blood pressures are higher. Kidney disease is also commoner as we grow older and older. No doubt about that. No doubt about that. Thank you very much, Dr. Vijay Kher. I think you've given a very important message that irrespective of the age, if you don't take care, you may fall victim to kidney disease. Right from the time you're born till you grow old, take care of your blood pressure, take care of your lifestyle, and take care of your kidney problems so that you don't fall victim at least till the age of 80. So kidney health to a very large extent is in your own hand. Dr. Vijay Kher comes when you find that there is some issue. एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर विजय खेर ने. If you see in his clinics, ज्यादातर लोगों को जो किडनी प्रॉब्लम है वो मेन है. उन्होंने ये भी कहा men are more recipient of kidneys but not donors, and women are more donors. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये समझना चाहिए. और ये भी कहा कि किडनी प्रॉब्लम की विमेन में जो होता है शायद अंडर एस्टिमेटेड है या वो रिपोर्ट नहीं करते ड्यू टू सम रीजन और द अदर. उसकी भी अवेयरनेस होना चाहिए कि चाहे मैन हो या विमेन हो, जब भी प्रॉब्लम हो जल्दी आके अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट करें तो मे बी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनको डायलिसिस की जरूरत ना पड़े और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े. लेकिन अगर दिखाएंगे नहीं तो फिर वो तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने मैसेज दिया, उसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए. डॉक्टर सानी, we come across so many patients of hypertension who come to us and just with a one fit of anger, their blood pressure goes up. So what is the relationship of stress or a stressful life? Because you mentioned it is very high in urban areas. Are the lifestyle different? Do they eat more salt? Do they eat more saturated fat? Or they are obese? They have a pot belly? What are the main factors? Or they eat a lot of achar? They eat a lot of salted stuff, which are responsible. So first important factor is stress. Please highlight on stress, sir. Thank you, Dr. Chopra. Yes, you have said that the important contribution for blood pressure, as we discussed about white coat, one of the important reasons is the stress of coming to the clinic. उसके कारण उनको एंजाइटी होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. So stress definitely plays an important role. Chronic stress is also coming up very important. Nowadays, what we see even younger population, हमारे कंट्री में जिनका कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. ड्यूरिंग कोविड टाइम भी हमने देखा उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया. सम पीपल दे डू नॉट गेट एडिक्वेट स्लीप. I mean, they have sleep disorder, not only because of that, they have shift duties where they are not getting enough sleep. If the sleep is not good quality sleep, that also we have seen, not the obstructive sleep apnea, but as such sleep quality is not good, that also results in increase in blood pressure. So stress is definitely very, very important risk factor for high blood pressure besides the lifestyle problem which we are facing, particularly younger population now between 30s and 50s. जो हमने देखा है कि लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हमने देखा है sedentary habits. The recommendation है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए we should have at least 5 days a week modest exercise, not very severe exercise, or per day you can say around 7,000 to 7,500 steps per day, and modest exercise is good enough. You do not have to have more than 10,000, but that is good enough. So the exercise will definitely help us not only in reducing blood pressure by a few millimeters. It improves your triglycerides, increases your HDL, improves the quality of LDL, reduces depression, improves sensitivity of insulin resistance, diabetes reduction. So all those multiple benefits हमने देखे हैं. Depression कम होता है, stress कम होता है. So exercise is a very important part of management of the high blood pressure. Second is diet, as you rightly said, that in diet the people are taking too much of salt because people are in a habit of taking the
the food, with a single button of phone, you get the food coming to your home, and those foods the fast foods are having high content of salt. So we should limit our salt, as the guideline says, to keep less than 5 grams per day. If you eat more than that, and for a blood pressure patient, it will increase the blood pressure. So salt intake has to be reduced to not more than 5 grams per day. Secondly, in diet, we now recommend that they should eat more potassium diet to reduce the blood pressure, and the potassium is present in the citrus fruits. So yeah, just a lemon ho gaya, coconut water hai, nuts and natural nuts hai, they are green vegetables, they are all having a lot of potassium, except for, and when people are using then in lemon water, they want to use the senda namak, but we have to be careful that if the patient has kidney disease, we do not advise them to have, because this contains more potassium. So except for those patients, those who are not having kidney disease, then high intake of potassium will definitely reduce the blood pressure in this population. Then we also strictly avoid sweet and sugary beverages, the aerated water, the artificial juices. So we suggest that to take lemon water, coconut water, or lassi, and type of beverages which are more healthy food to be taken. And third, very important, is the tobacco. The tobacco consumption, both the smoking as well as chewing tobacco, both are important causes of high blood pressure. And finally, I will say alcohol consumption. Many people, they ask us, alcohol, we have learned that if you take alcohol in a large quantity, definitely it increases blood pressure. Binge drinking not only increases blood pressure, but also results in arrhythmias like atrial fibrillation. So what we suggest, a modest drink, social drink is the best way to go. And that is that less than 2 drink or 150 ml or maybe 5 ounces of wine or maybe 1 pint of beer. But for women, hum kehte hain, uske intake should be half of the men, because they lack the enzyme to metabolize the alcohol. So if you follow a lifestyle modification as a whole, then a significant number of patients will able to reduce their blood pressure without pharmacological treatment, without giving any drug. So look at the people, those who are obese, if you reduce the their body weight, they will reduce the blood pressure also. So all those factors are very important to control blood pressure by lifestyle modification. And stress ke liye kai bar hum suggestion dete hain, meditation kariye, yoga exercise kariye. They are very useful, particularly in those patients, those who are chronically stressed. Thank you very much, Dr. Sani. I think a very important message of lifestyle optimization is the need of the hour. Not after you become hypertensive and not after you become a victim of CKD. It should start right from childhood. All the 8 limbs of yoga should be practiced. Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. Right from childhood, all of us should practice. Dr. Sani also mentioned, burn your anger before it burns you. Just 1 fit of anger can cause a brain hemorrhage. 1 fit of anger can cause a massive heart attack. I have seen patients coming to me from Okhla, the CMDs, because they are not able to meet the deadlines. So they lose temper and they are brought to a massive heart attack or even sudden death. The most important message is that please control your stress and control your anger. And the second important thing Dr. Sani has mentioned, please sleep for 6 to 8 hours. There is a strong relationship between the sleep and hypertension. सोना बहुत जरूरी है. ये देखा गया कि जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं रात को, उनका डायरनल वेरिएशन चेंज हो जाता है, उनके अंदर हाइपरटेंशन ज्यादा होता है. तो सोना बहुत जरूरी है, संयम बहुत जरूरी है. So attitude of calmness is required. इसकी बहुत सख्त जरूरत है. लोग काम नहीं है, hostile हैं, cynical behavior, arrogance, ego, they are the real killers. And we should have a compassion, altruism, empathy, sympathy, peace and harmony in life. We live long. There, I think the very important message is given by Dr. Sani, besides the diet. And I think because of paucity of time, we cannot discuss more, but air pollution is also a very important factor. Similarly, the noise pollution. They are all the factors for hypertension. And now I'll ask Dr. Vijay Kher, what are your messages to the masses? Where you suspect kidney disease, what are the common signs, symptoms, and what is the basic investigation required? Because a lot of people ask, what is EGFR? Kya hota hai urine mein protein?
इसके बारे में जानकारी दीजिए, सो दैट एवरीबॉडी नोज कि हाउ कैन यू डायग्नोज कि आई गॉट शायद मेरी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर विजय खेर सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किडनी की बीमारी को कैसे पहचाने। पहले मरीज खुद कैसे पहचान सकता है, और अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कैसे उसे पहचान सकता है। Important signs, early signs or symptoms of kidney disease are usually a young person who has high blood pressure. So one should look at kidney disease. And somebody who is not growing well. अगर एक बच्चा अच्छी तरह से grow नहीं कर रहा है, is not achieving his height potential, is not growing potentially well, look at kidney disease. So very early signs are in children especially. If they are not growing well, or somebody has a blood pressure below the age of 30 years. डॉक्टर सानी बता रहे थे एसेंशियल हाइपरटेंशन, एक तो करेक्टेबल और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जिसमें किडनी डिजीज भी आती है, बट प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका कोई कारण नहीं है वो कॉमन है, यूजुअली 30, 35, 40 साल के बाद शुरू होता है, यूजुअली 7 साल तक हाईएस्ट प्रेवलेंस है। एडल्ट पॉपुलेशन में उन्होंने कहा 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन है। सो अर्ली, जब यंग एज में ब्लड प्रेशर पहली बार दिखे या बुढ़ापे में पहली बार ब्लड प्रेशर दिखे तो उस वक्त जरूर किडनी का सोचिएगा, किडनी की बीमारी। यूरिन में जाग आना, यूरिन में जाग इज ए रिफ्लेक्शन कि भाई कि यूरिन में एल्ब्यूमिन निकल रहा, प्रोटीन निकल रहा। नॉर्मली हमारा किडनी का जो फिल्टर है ग्लोमेरुलस, जिसे जो डॉक्टर चोपड़ा, नेफ्रॉन एक यूनिट है, उस यूनिट का जो सर है वो है ग्लोमेरुलस या फिल्टर जिसे कहते हैं, जो जिससे कि यूरिन फिल्टर होता है। तो उसमें एल्ब्यूमिन नॉर्मली नहीं निकलता है, मगर अगर किडनी की बीमारी शुरू हो जाती है तो वो एल्ब्यूमिन बाहर आना शुरू होता है। तो यूजुअली यूरिन में जाग दिखेगी, पाँव में स्वेलिंग होगी या आंखों के ऊपर स्वेलिंग दिखेगी। सबसे पहले आपको जब भी कभी थोड़ी सी स्वेलिंग, और ये कॉमन नॉलेज है, आपकी दादी और नानी सबको पता है कि जब भी थोड़ी सी किसी की आंखों में सूजन लगती है तो वो कहते हैं कि अरे भाई जरा देख लें, किडनी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, देख तो ले। तो कॉमन नॉलेज इज व्हेनेवर आईज और फीट स्वेल, ये किडनी के डिजीज में हो सकता है। हार्ट की बीमारी में भी सूजन आ जाती है और लिवर की बीमारी में भी सूजन आ सकती है, बट किडनी की बीमारी कॉमन, स्पेशली अगर जाग आ रहा हो साथ में, ब्लड प्रेशर बताया। फिर किडनी का फंक्शन जैसे और कम हो जाता है तो मैंने जो हार्मोनल डिफिशिएंसीज कहीं कि विटामिन डी होगा, बोन पेन्स होंगी, खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ये होगा, सांस फूलने लगेगा जब, क्योंकि नमक और पानी इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं होता था, स्वेलिंग और बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, भूख अच्छी नहीं लगती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, जनरल इंटरेस्ट, जबकि टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि किडनी निकाल नहीं पाती है, तो तब कई चीजें हो सकती हैं और इंसान इवन कोमा में जा सकता। हार्ट फेलियर बहुत कॉमन है ऐसे मरीजों में, और नींद बहुत आ जाएगी, अच्छा काम नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहेगा लाइफ में। सो ये सभी चीजें वो, मगर लेट स्टेजेस हैं। अर्ली स्टेजेस में जैसे मैंने कहा कि हम जानते कैसे हैं, इसका टेस्ट क्या किया जाता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे किडनी बीमारी 2 टेस्ट से पता चलता है, एक तो यूरिन में प्रोटीन देखना या एल्ब्यूमिन मेजर करना, और अर्ली स्टेजेस में माइक्रो एल्ब्यूमिन होता है और जैसे स्टेज बढ़ती है तो एल्ब्यूमिन हो जाता है। तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर में अगर आप माइक्रो एल्ब्यूमिन को नापेंगे तो किडनी के मरीजों में ये पहला साइन है कि भाई माइक्रो एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है। माइक्रो एल्ब्यूमिन है, नॉर्मली एल्ब्यूमिन हमारा 30 मिलीग्राम से कम होता है 24 घंटे में, 30 से 300 मिलीग्राम तक होता है, उसको माइक्रो एल्ब्यूमिन कहते हैं। और जब ये 300 से ज्यादा हो जाता है तो उसको प्रोटीन या मेल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। तो यूरिन में खूब सारी जाग दिखती है, तब माइक्रो एल्ब्यूमिन में कई बार जाग नहीं दिखती है, मगर अगर आप टेस्ट कराएंगे माइक्रो एल्ब्यूमिन का तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, किडनी में थोड़ा सा अर्ली है डिटेक्शन ये। और यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली यूरिया और क्रिएटिनिन जब बढ़ने लगता है तब तक 40% किडनी का फंक्शन ऑलरेडी कम हो गया होता है। सो यूरिया और क्रिएटिनिन जो है टेस्ट
जब ये एबनॉर्मल होता है तो जब तक वो एबनॉर्मल दिखता है तब तक 40% से 50% फंक्शन किडनी का उड़ गया। सो इसीलिए डॉक्टर चोपड़ा ने कहा कि ये ईजीएफआर क्या होता है। और आजकल आप देखेंगे जब भी आप लैब में जाते हैं कई बार, तो वो क्रिएटिनिन से ईजीएफआर कैलकुलेट करके आपको ईजीएफआर बताते हैं। और कई मरीज बहुत घबरा जाते हैं जब वो देखते हैं कि ईजीएफआर तो 30 रह गया, 50 रह गया, और जिसका ये मतलब जो लैब वाला समझाता है उनको कि 50% फंक्शन आपका किडनी का कम हो गया, तो एकदम घबरा जाते हैं कि भाई ईजीएफआर कम हो गया। सो ईजीएफआर को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आजकल स्टैंडर्डाइजेशन ऐसी हो गई कि कई लैब्स क्रिएटिनिन से ईजीएफआर करते हैं। तो वो अर्ली ईजीएफआर जो है वो किडनी फंक्शन का डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिन करता है कि भाई किडनी का फंक्शन है कितना। नॉर्मल इंसान का ईजीएफआर अबाउट 100 ml के करीब होता है। सो 100 ml पर मिनट जो है फिल्ट्रेशन होती है किडनी की। हम 170 लीटर फिल्टर करते हैं एक दिन में, 170 लीटर। ब्लड से मैंने कहा 1200 ml का होता है, 100 ml का फिल्ट्रेशन एक मिनट में हो तो 1414 को करेंगे तो ऑलमोस्ट 170 लीटर, 160 लीटर के करीब का फिल्टर होता है, जिसमें से हम 1.5 लीटर यूरिन करते हैं। बाकी किडनी सारा वापस ले जाती है क्योंकि वो बॉडी को जरूरत होती है, इसीलिए ये होता है। सो अर्ली साइंस जो होंगे वो वही है, सूजन, यूरिन में एल्ब्यूमिन, ब्लड प्रेशर का दिखना यंग चिल्ड्रन में, और यूरिया और क्रिएटिनिन, ईजीएफआर करना और एल्ब्यूमिन को डिटरमिन करना। ये चीजें अर्ली साइंस हैं जिससे कि पता चलता है कि भाई एक किडनी की बीमारी को कैसे डॉक्टर लोग भी पकड़ सकते हैं और मरीज भी जल्दी से पकड़ सकते हैं। Thank you very much, Dr. Vijay Kher. Very nice expression in a very simplified, dignified, and a very scientific manner. A common man can understand the value of protein in the urine. You mentioned urea, creatinine, और ये भी आपने कहा अगर ये बढ़ जाए तो 40% से 50% तो आप किडनी की फंक्शन कम कर रही है। उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है हर एक आदमी के लिए। Very important question, Dr. Vijay Kher. Which are the common indications when a patient you think may require dialysis? Number one. And number two, people are talking a lot about the transplant, and you are a master, subjecting your patient to the kidney transplant. Which is the earliest age group patient you subjected to a transplant, and which is the oldest age group you subjected your patient to a transplant, and what is the survival after kidney transplant? 3-4 questions, but that is, I think, the last question to you, which is a very, very important for the information of masses. Dr. Vijay Kher, sir. क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे हमने कहा, जो बात कर रहे थे अभी तक, इट्स ए स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज, धीरे धीरे बढ़ती है। ये नहीं है कि एकदम अभी हुई और एकदम ही आप को, अनलेस के आपको लेट पता चला तब तक आपने नेग्लेक्ट किया इसको, तब ऑब्वियसली किडनी डिजीज लेट स्टेज में पकड़ी गई और लेट स्टेज में आपने दिखाने आए। बट नॉर्मली 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक। जबकि जीएफआर 90 या 100 से ऊपर हो बट एल्ब्यूमिन हो यूरिन में, स्टेज 2 जब 90 से 60 हो जाए और एल्ब्यूमिन हो यूरिन में 60 से 30 तक हो जाए तो स्टेज 3 हो गई, 30 से 15 तक हो जाए जीएफआर तो स्टेज 4 हो गई। जब किडनी का फंक्शन 15% से कम हो जाए और वो किडनी का फंक्शन, या स्टेज 5 किडनी डिजीज हो और वो किडनी का फंक्शन ठीक नहीं होने वाला। ठीक, कई कारण हो सकते हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, चाहे जैसे किडनी फेलियर का जो कारण है, एक तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है जो कि स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज, जो सालों के ऊपर चलती है, धीरे धीरे बढ़ती है, किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम होता है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन उसके कॉमन कारण। बट कुछ कारण किडनी का फंक्शन एकदम खराब हो सकता है, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं या एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। वो यूजुअली लॉस ऑफ ब्लड, एक्सीडेंट से हो गया, पानी की कमी हो गई, नमक की कमी हो गई, सडन डायरिया और डिहाइड्रेशन हो गया, एकदम पानी की कमी हो गई, ये रिवर्सिबल कॉज है।
ये ठीक होने वाली बीमारी है। यूजुअली इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे ही ब्लड प्रेशर और पानी की कमी ठीक कर दिया जाए तो ये किडनी का फंक्शन ठीक हो जाएगा, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ये रिवर्सिबल है, मगर क्रॉनिक किडनी डिजीज इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यूजुअली एक बार शुरू हो जाता है तो बढ़ता है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। जब किडनी का फंक्शन 15% से कम हो और किडनी फेलियर के सिम्टम्स हो, भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाया जाता, उल्टी आती है, हड्डियां कमजोर हैं, जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो सारे फीचर्स जो हैं वो किडनी फेलियर के फीचर्स हैं। उस वक्त डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। यूजुअली ऐसे मरीज में जिसको स्टेज 5 किडनी डिजीज कहें या किडनी फेलियर कहें और क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ठीक होने वाला नहीं है, उस वक्त 2 इलाज हो सकते हैं। या तो डायलिसिस से आदमी को जिंदा रखा जा सकता है या फिर ट्रांसप्लांट होगा ऐसे आदमी में जब किडनी का फंक्शन किडनी। ऐसे किडनी फेलियर का इलाज या तो किडनी ट्रांसप्लांट है या डायलिसिस है। डायलिसिस से इमीडिएट किडनी के फंक्शन में थोड़ा सा जान आ जाती है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी नहीं निकाल पाती है वो डायलिसिस से निकाला जाता है आर्टिफिशियली। या तो ब्लड डायलिसिस करते हैं जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, जो यूजुअली 4 घंटे होती है। एक सेंटर में जाते हैं, हीमोडायलिसिस की मशीन पे लगाया जाता है, खून निकाल के मशीन में साफ होता है और वापस कर दिया जाता है। 4 घंटे के लिए होता है, यूजुअली 2 या 3 बार होगा हफ्ते में। एक पेट का डायलिसिस होता है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, तो हम अपना पेट का मेम्ब्रेन ही यूज करते हैं डायलिसिस के लिए। वो रोज होगा, दिन में 4 बार होता है, घर पे होता है, पेशेंट को ट्रेन किया जाता है, तो वो घर पे अपने आप ही रोज कर सकता है 4 बार। या एक मशीन खरीद सकते हैं जो रात को जब पेशेंट सो रहा होता है उस वक्त पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि डॉक्टर चोपड़ा कह रहे थे अभी। वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई डोनर होना चाहिए जिसकी किडनी लगानी चाहिए। यूजुअली बाहर के देशों में कैडावर ट्रांसप्लांट होता है, हमारे देश में भी अब बढ़ने लगा है डिजीज डोनर, की एक्सीडेंट से ब्रेन डेथ हुआ, ऑर्गन डोनेट हुए और 2 आदमियों को एक किडनी लगती है। सो या तो वो डोनर होना चाहिए या कोई रिश्तेदार अपना लिविंग डोनर होना चाहिए जो कि एक किडनी निकाल सकते हैं, जिसको देखा जा सकता है कि डोनर में कोई कमी ना आ जाए, और उस डोनर की किडनी लगा के उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। सो ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट है एज फार एज सर्वाइवल इज कंसर्न, बेटर देन डायलिसिस। लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, और कॉस्ट भी ट्रांसप्लांटेशन का कम है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस डायलिसिस। सबसे छोटा ट्रांसप्लांट हमने कितना किया, हमने 5 साल के बच्चे का ट्रांसप्लांट किया, बट किसी भी बच्चे का 2 साल के बाद ट्रांसप्लांट आसान हो सकता है, किया जा सकता है, और दुनिया में हो रहे हैं। सबसे ओल्डर इंसान का मैंने कब कैसा ट्रांसप्लांट किया, तो हमने 80 इयर्स के आदमी का ट्रांसप्लांट किया, एंड ही लिव्ड फॉर अनदर 7 years एंड डाइड ऑफ कैंसर लंग लेटर 87 years की एज में। सो सबसे छोटा हमने 5 साल किया, बट 2 साल के बाद एक एडल्ट किडनी को बच्चों में लगाई जा सकती है, तो ऐसा ट्रांसप्लांट हो सकता है। Thank you very much, Dr. Vijay Kher, for a brilliant expression today. That kidney transplant is the need of the hour. Organ donation is the need of the hour. Awareness should go on the donation. The lifestyle is better after kidney transplant. Dialysis is a little cumbersome. People feel a psychological impact. And I think you mentioned a very important point. Don't be scared of your age. If your vascular age is good, you have less comorbidities, you are the right person to go for a kidney transplant, even at the age of 80. Very important word of Dr. Vijay Kher, who is a master of kidney dialysis, kidney diseases, and subjecting our patient kidney transplant. I think that's a very important message. The last question to Dr. JPS Sani. Dr. Sani, I'd like to ask you 3 or 4 important questions, but I feel that every person should know what are the medicine which they should be aware of. Like in the United States, people are aware of all the medicines, all the people. We talked of diuretic, we talk of hydralazine or hydrochlorothiazide or chlorthalidone or indapamide. ये तीनों डाययूरेटिक में सबसे अच्छा डाययूरेटिक आप क्या समझते हैं जिसकी जानकारी पब्लिक को होना चाहिए? एंड नंबर 2, हम काफी लोगों को यंग एज में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, कईयों को एम्लोडिपिन देते हैं, कईयों को एजिलिटिपिन देते हैं, कईयों को सिल्डिपिन देते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए
कि लोगों को क्या जानकारी होना चाहिए, यंग वर्सेस ओल्ड, ओल्ड में कोमॉर्बिडिटीज हो, विदाउट कोमॉर्बिडिटी हो, मेन वर्सेस वुमेन, थोड़ी इसके बारे में जानकारी दीजिए। और थर्ड, अबाउट द EC inhibitors और ARBs एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कमिंग अप नाउ ऑन क्लोनिडिन ट्रीटमेंट एंड एपिलेरॉन ट्रीटमेंट। तो थोड़ा ये दवाइयों के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं जिनको ENT स्पेशलिस्ट कुछ नेजल ड्रॉप देते हैं, उनका ब्लड प्रेशर शॉर्ट सर्किट, उसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है। To start with the diuretics, then calcium channel blockers, ARBs and beta blockers, and of course we talk on clonidine and eplerenone. Dr. JP Sani sir. Thank you, Dr. Chopra. So rightly आपने बताया कि there are 4-5 group of drugs which we use for blood pressure. One is diuretic, the other one is RAS blocker जिसको ACE inhibitor, ARB कहते हैं, then calcium channel blocker, and then some cases जिसको resistant hypertension by definition कहते हैं, जिसमें कि patient को 3 drugs मिली, उसमें एक drug diuretic मिली है, one of those chlorthalidone or hydrochlorothiazide or the indapamide, उसके बाद भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आता तो उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। और उन केसेस में हमने बोला है कि MRAs जिसको बोलते हैं, स्पाइरोलैक्टोन और एपिलेरॉन ग्रुप ऑफ ड्रग जरूर देनी चाहिए टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तो इसी तरह से हम, और अभी रिसेंटली ये भी बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस की सिंगल मोनोथेरेपी से मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर के पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, except for a very young people, those who got hyperactive or those who are sympathetic overactive, तो उसमें कई बार सिंगल ड्रग से हो जाता है। या वेरी एल्डरली पेशेंट, फ्लेल पेशेंट्स हैं, उनमें कई बार हमने सिंगल ड्रग से बीपी को कंट्रोल होते देखा है। लेकिन मेजॉरिटी द कॉमन ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को 2 दवाइयां देनी पड़ती, 2 ग्रुप की दवाइयां देनी पड़ती हैं, 2 डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से एक्ट करना पड़ता है जिससे कि ब्लड प्रेशर नीचे आए। क्योंकि वी नो जो सिस्टम इस तरह से बना है कि इट इज डिटरमिन्ड टू बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय मल्टीपल पाथवेज लाइक रेनिन सिस्टम, डॉक्टर खेर ने बताया, सिंपैथेटिक सिस्टम, सोडियम हैंडलिंग, these are 2-3 important causes. That's why according to them this mechanism हम दवाई को चूज करते हैं। So coming to the fixed dose combination has come up in a big way कि भाई एक RAS ब्लॉकर की दवाई ली जाए और साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ली जाए, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल ब्लड प्रेशर लेवल हम स्मॉल डोजेस दोनों को ज्वाइन करके देते हैं। अगर बीपी कंट्रोल ना हो तो स्टेप 2 में हम उनकी डोजेस बढ़ा देते हैं, फिर भी बीपी कंट्रोल ना हो तो थर्ड में हम डाययूरेटिक ऐड करते हैं। तो 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। उसका एडवांटेज क्या है कि हम डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म सब एक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर जल्दी नीचे आता है। और सिंस वी आर यूजिंग स्मॉल डोजेस ऑफ बोथ दी और ट्रिपल ड्रग, देन उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। कई बार ये होता है एक ड्रग का साइड इफेक्ट दूसरा ड्रग उसको काउंटर एक्ट करता है, तो सेफली हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं। और सारी दवाइयां एक ही पिल में होती हैं तो कंप्लायंस अच्छा होता है, एडहेरेंस अच्छा होता है, पर्टिकुलरली एल्डरली पॉपुलेशन में जो दोज पॉपुलेशन दे आर टेकिंग मेनी अदर ड्रग्स आल्सो, सो समटाइम इंपॉर्टेंट ड्रग छूट जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में बहुत फायदा होता है, कॉस्ट फैक्टर भी फायदा होता है बिकॉज पैकेजिंग इज टेकन केयर ऑफ, तो ड्रग चीपर हो जाती है। इसलिए कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द डाययूरेटिक व्हिच वी आर यूजिंग नाउअडेज फॉर द इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए हमने देखा, स्टडीज हैं हमारे पास अवेलेबल, मैनी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि क्लोरथैलिडोन हाइड्रोक्लोरथाइजाइड से थोड़ा बेटर है, उसका एफिकेसी अच्छी है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। सम स्टडीज में बताया कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स उससे थोड़े कम होते हैं, and that's why it is becoming much more popular now, although indapamide can be also used. And for resistant hypertension में हमें spironolactone या eplerenone ग्रुप की दवाई हमें देनी पड़ती है। हमें ये भी ध्यान रखना है एल्डरली और यंग में कि एल्डरली पॉपुलेशन में थोड़ा ध्यान नहीं रखना होता है कि एक स्लोगन है कि go start low and go slow. What we mean is that कि elderly population में जैसे हम adult normal elderly population दो definition ये होता है above 65 and very elderly is above 80 years of age, and इसमें हमें थोड़ा respect देना होता है उनको बीपी को जरूरी नहीं हमें 140-90 से नीचे, हमें 160 से 150 के बीच में भी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है कि एज द एज एडवांसेस, डॉक्टर खेर ने बताया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम नहीं होती। तो उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नीचे लाना भी ठीक नहीं होता
बिकॉज एल्डरली पॉपुलेशन में उनको कई बार ब्लड प्रोस्टेट की दवाई भी मिल रही होती है, तो इन दवाइयों से पोस्चरल हाइपरटेंशन होता है। पोस्चरल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि सिटिंग ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल भी हो जाए, खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है 20 मिलीमीटर से ज्यादा, जिससे उनको गिडीनेस होती है, चक्कर होती है, गिरने का डर होता है, फ्रैक्चर होने का डर होता है। सो एल्डरली पॉपुलेशन को हमें बड़ा रेस्पेक्टफुली, वेरी कॉशियसली ट्रीट करना चाहिए। स्मॉल डोज से स्टार्ट करना चाहिए, मे बी मल्टीपल ड्रग्स देनी पड़ती हैं उनको, बट ऑलवेज चेक ब्लड प्रेशर बोथ इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन टू प्रिवेंट पोस्चरल फॉल। So this is what I would like to say for young population. हमने देखा आजकल बड़े यंग बच्चे हमारे पास आते हैं विद ब्लड प्रेशर, सिंपैथेटिक एक्टिविटी उनकी ज्यादा है, उनमें हमने देखा है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, 130-40 होगा, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए यंग एज में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की भी इंपॉर्टेंस है, दैट कैन लीड टू इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स फ्यूचर में। तो उनमें हमने देखा है कई बार स्मॉल डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर हमें देनी पड़ती है to counteract their sympathetic overdrive along with RAS blocker or maybe small dose of diuretic. So इस तरह से, और in sometimes anxiolytic drugs भी add करनी पड़ती है if they have lot of anxiety and stress or lack of sleep and also. So इस तरह से हमें difference individualized treatment करना चाहिए for both the elderly and the younger population. But as a whole, the calcium channel blocker, as you have said, we have got many drugs like amlodipine is used, cilnidipine is being used now. एंड cilnidipine का और जो नई दवाइयां और भी arginidipine ड्रॉप के आई हैं, इनका थोड़ा एडेड एडवांटेज है कि किडनी को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं कॉमनली इन ड्रग्स को यूज करते हैं बिकॉज इसमें पीडल एडिमा थोड़ा कम होता है और बेटर रेनल प्रोटेक्शन होती है विद दिस ग्रुप ऑफ ड्रग कंपेयर टू amlodipine. Thank you very much. I think Dr. J.P. Sani has given a very clear-cut message that out of all the diuretics, the diuretic which is relatively superior is chlorthalidone. बाकी diuretic like hydrochlorothiazide से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, डायबिटोजेनिक होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज्यादा होता है, क्लोरथैलिडोन से कम होता है। एक मैसेज डॉक्टर सानी ने शुरू में कहा था कि गर्मी में इनका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, अगर कोई 12.5 ले तो 6.25 हो जाता है। एंड नंबर 2 इज मेंशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक एज़ल्डिपिन और एम्लोडिपिन और सिल्निडिपिन। लेकिन ये देखा गया है कि जो दवाई एज़ल्डिपिन है उससे पीडल एडिमा ना के बराबर होता है और टेकिकार्डिया नहीं होता, पल्स ज्यादा बढ़ती नहीं, एम्लोडिपिन से बढ़ जाती है। और ये देखा कि जो रीनल परफ्यूजन जो है वो भी काफी हद तक एज़ल्डिपिन से बेटर है और सिल्निडिपिन से भी बेटर है, एम्लोडिपिन से भी है, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा है। और एंटी रेनिन इफेक्ट, एंटी एल्डोस्टेरॉन इफेक्ट, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट आर बेटर। खूब डेटा आ रहा है, जापान की एक स्टडी में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों ने काफी इसके ऊपर काम किया है। इंडिया में हमको और काम करना है। एंड आई थिंक अगर कोई किडनी का पेशेंट हो या कोई सीओपीडी हो या हार्ट फेलियर हो और हमको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है तो इट इज प्रेफर्ड टू गिव एज़ल्डिपिन बिकॉज उससे एडिमा नहीं होता है, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम अलीगढ़, उसको सीओपीडी था और किसी ने एम्लोगार्ड दिया और हमको डायग्नोस बना के भेजा हार्ट फेलियर। हमने उसका एको किया, सब कुछ किया, फीलिंग प्रेशर्स वे नॉर्मल, तो heart failure mimicking presentation was there by amlodipine, which is a very, very important precaution. I totally agree with Dr. Sani. Individualize your patient. हर एक पेशेंट का डिफरेंट होता है रिक्वायरमेंट, उसको देखना बहुत जरूरी है। So to conclude, ladies and gentlemen, hypertension and kidney care is the need of the hour. That is the gist of this dialogue by Professor J.P. Sani and Professor Vijay Kher, and I am very happy to be a part of it. I must say, if you want to grow younger and live longer, we have to take care of hypertension in kidney together because they have a very strong relationship. BP and kidney fitness may be the game changer of a total heart and vascular health, and vascular age is of a tremendous potential in our practice. We should never undermine the effect of vascular health. We are confined to only organ, but total vascular tree is equally important. We must create such dialogues more often to create impact globally by acting locally as we are doing it today. And I really appeal to all the masses today that we must launch a program like Mission Heart and Kidney Care more actively. I may also request both Dr. Vijay Kher
and Dr. JPS Sani that we must launch an app on hypertension and kidney care in public interest. Doctors know, but public should also know because 90% of people are not aware of. I must say in the last, ladies and gentlemen, to conclude, that we must announce digital health for all by the year 2030 on hypertension and kidney care. Digital health, digital mission, digital transformation, and artificial intelligence is the need of the hour. Evolution to revolution in the healthcare industry is possible if we go digital. Telehealth or robotic intervention is also coming up in a big way in the whole globe. There is a very strong interface between the science and humanity. Time to act is now, before it's too late. We can't be confined to only conferences, limiting only up to 10% of what we do. I don't say we should not do it. We should do it, but it should percolate down into the public, to the masses, if we really want to create an impact from illness to wellness. I must say Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, television, newspaper, and magazines are important methodology should be used in imparting education on hypertension and kidney care. We must inform, perform, reform, and transform the whole world on the kidney health and blood pressure health. It's possible if we have eminent people like Dr. Vijay Kher and Dr. JPS Sani are with us, which act vocally, locally, focally, and globally. Ladies and gentlemen, from the core of my heart, I express my gratitude and thanks to Professor JPS Sani, Professor Dr. Vijay Kher for their words of wisdom and interaction almost for the last 60 minutes. Johnny Edwin, Vice President of IPCA, Asha Kapoor, Vrishali Puranik from Tata Play Fem Health for their support to make this program a success. I'm sure I'm also very, very grateful to each and every one of the member of the public who is listening to us. If there are any questions, you may please communicate with Fem Health so that we can reply to each and every question by our eminent faculty, Dr. Vijay Kher and Dr. JPS Sani. Thank you very much. Thanks. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।